Hello everyone. So today's topic is about case studies. So this is your second unit of first subject. So इस unit में we will going to see the topic cover on in this unit Apache web server, GNU Linux, Android, Mozilla, Wikipedia, WordPress, GCC, GDB, GitHub, OpenOffice. So ये कुछ टॉपिक्स है जो इस सेकेंड यूनिट में हमें कवर करने हैं. ओके. So let's move on. The first topic is about what in second unit Apache web server. Okay, Apache web server. Let's see what is the in this Apache web server. Okay, just 1 minute. Okay, so आज का टॉपिक है हमारा Apache web server which is in unit second. So what is Apache web server? Apache is a web server and it is distributed under an open source. It is a web server. Okay, and it distributed under the open source. Now you know very well what is the open source and closed source, right? Unit first में हमने open source, closed source and free source study किया है. So no need to again explain the meaning of open source. So just you have to understand that Apache web server, it is a web server and it distributed under the open source. Okay. Which is a freely available. Now you know here written that which is a freely available. You know very well open source it is a freely available and closed source is what we can use it, we can study, but we can't modify it, right, without owner permission. So here in Apache server, this is a type of web server. Yeah, you can say Apache server. It is a web server which is distributed under the open source. Okay, and it's freely available. The Linux Digital Unix, Solars, and AIX operating system like Linux. Linux is a type of OS, that is an operating system. Then you can say digital Unix. Digital is also one type of operating system. Okay, digital Unix. Then you can say AIX. This is also one type of OS system, means operating. Okay, operating system. So these are the operating system. Let's see. Okay, so here what the Linux Digital Unix AI operating system mostly run the 2.0 version of Apache server. Once means what it's mostly run in the version of 2.0 in Apache server. Okay, 2.0 or 2.0 version of Apache server. Okay, so यहाँ पे वी नो हमने देखा कि अपाची वेब सर्वर एक टाइप का ओपन सोर्स सर्वर है, सॉरी वेब सर्वर है अपाची, और ये एक ओपन सोर्स के अंडर आता है जो फ्रीली अवेलेबल होता है सभी के लिए, राइट. तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि लिनक्स डिजिटल यूनिक्स एआईएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मोस्टली रन होती है अपाची वेब सर्वर के वर्जन 2 पे. ओके, सो ये कुछ हम लोगों ने यहाँ पे देखा ऑन दिस ड्राइव सिस्टम लाइक. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द नेटक्राफ्ट सर्वे, मतलब अकॉर्डिंग एक नेटक्राफ्ट सर्वर के सर्वे के अकॉर्डिंग 60% ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट आर यूज अपाची टू कंपेयरिंग अदर सर्वर. ओके, यहाँ पे क्या है 60%, मतलब एक सर्वे था किसका, लेट मी टेल यू, वेट. ओके, अकॉर्डिंग टू द हियर एक सर्वे की नेट क्राफ्ट सर्वे के अकॉर्डिंग
just 1 minute. ओके, नेटक्राफ्ट सर्वे के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, उसके अकॉर्डिंग से पता चला कि नेटक्राफ्ट एक इस टाइप ऑफ सर्वर, ओके, जस्ट given space, but in your books now space is not there here. Okay, leave it there also. Okay, so net, okay, we will give this space, but space नहीं है. Okay, netcraft server के according सर्वे के अकॉर्डिंग 60% of websites on internet are use Apache to comparing other server. Apache server is widely used, मतलब 60% सर्वर वेबसाइट ये Apache server यूज करते हैं. We can say that Apache server is widely used. The most widely used server software is the Apache. Okay, it is a widely usable server. Okay, most widely is what? Apache server. Most widely used server software is what? Okay, जो मोस्टली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो कौन सा सर्वर है? अपाची सर्वर. ओके, सो इतना तो आपको समझ में आया कि नेटक्राफ्ट के सर्वर के सर्वे के अकॉर्डिंग 60% ऑफ वेबसाइट्स यूजिंग अपाची सर्वर टू कंपेयर द अदर सर्वर, एंड वी कैन से दैट अपाची सर्वर इज वाइडली यूज, and the most widely used server software is the Apache software. Okay, the Apache server are maintained and developed by अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन. तो अपाची सर्वर क्या करती है? मेंटेन करती है और डेवलप करती है बाय अपाची सर्वर फाउंडेशन, सॉफ्टवेयर फाउंडेशन. अपाची सर्वर इज सिक्योर, रिलायबल एंड फास्ट. अपाची सर्वर ये एक सिक्योर है, रिलायबल है, मतलब एनी इजी टू यूज, ओके, एंड फास्ट है. दैट्स व्हाई वेबसाइट आर यूजिंग दिस अपाची सर्वर, राइट? नाउ many WordPress hosting providers are using the Apache server as their web server software. Okay, WordPress means many WordPress भी एक यू कैन से वर्डप्रेस के थ्रू भी हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं. ओके, हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं जिसके लिए हम लोग अपाची सर्वर भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे गिवन है कि वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइडर आर यूजिंग द अपाची सर्वर. मतलब आपने वेबसाइट तो आपने सुना ही है, राइट? जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर होता है वो क्या करता है? अपाची सर्वर का यूज करता है एज ए वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, मतलब वेब सर्वर के सॉफ्टवेयर को एज वेब सर्वर सॉफ्टवेयर. The WordPress also run on other web server software as well. Okay, so what do you mean by Apache 2.2 system? So ये सब overall था 2.0. So let's move on. What do you mean? Okay, what do you mean? Okay, Apache 2.2 सिस्टम. अभी हम लोगों ने 1 सिस्टम देखा है, राइट? लेट्स सी द 2.2 सिस्टम. So here, अभी फॉर द मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यूनिक्स एंड विंडोज एंटी अपाची. मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है? मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, अभी जो हमने प्रीवियस देखा 2.0, ये ओल्ड, मतलब प्रीवियस बोल सकते हैं, मतलब पहले की ट्रेडिशनल सिस्टम थी ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स डिजिटल. अब मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यूनिक्स, लाइक एंड विंडोज Windows NT. Okay, Unix, Windows NT. Then you can say Apache, Apache HTTP server, HTTP server, FR2 server, Apache F, and also
the open source HTTP server. Maintain open source HTTP server. HTTP सर्वर ओके तो यहाँ पे देखिए तो 2 what do you mean by Apache 2.2 system? So here for the modern operating system like Unix and Windows NT, Apache HTTP server efforts to develop and also maintain the open source HTTP server. The main motive of Apache server is to provide a security, extensibility, and efficient HTTP service सिंक्रोनाइज विद करंट HTTP स्टैंडर्ड्स. मतलब यहाँ पे जो मेन है इस सिस्टम का काम क्या है 2.2 का, वो मेन पर्पस है या मोटिव है, मोटो है उनका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, देन इफिशिएंसी प्रोवाइड करना मतलब HTTP सर्विस को. ओके सो यहाँ पे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे वर्क करती है. इन 2 में हमने ट्रेडिशनल देखा, यहाँ पे मॉडर्न सपोर्ट करती है मतलब. ओके so what do you mean by HTTP server here? HTTP server is another name of web server. HTTP server ये एक you can say it's another name of web server. HTTP server, what do you mean by HTTP server? Is another name, okay, another name of web server. Okay, तो यहाँ पे क्या है, HTTP एक ये एक वेब सर्वर है. इन अपाचे वेब सर्वर, द वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. ओके, वेब सर्वर ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है. द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मैप्स द URL request come from a web client to a resource. That request will handle and return response to the client. यहाँ पे क्या होता है, इन वेब HTTP सर्वर में रिक्वेस्ट हैंडल होती है, वो मतलब जो भी रिक्वेस्ट आएंगी ओके वो हैंडल होती है, देन इट्स रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट. सर्वर एंड क्लाइंट रोल प्ले करता है. ओके जैसे कि अगर आपने कुछ टाइप किया, इनने आपको सपोज कुछ गूगल करना है, मीन्स आप यू वांट टू नो अबाउट इंफॉर्मेशन इन एनी सिटी, सपोज किसी भी सिटी में से किसी भी सिटी की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एग्जाम्पल या कुछ भी चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन, व्हेन यू टाइप इन गूगल राइट, so you send a request to the server, and when the server answer to you is called response. Okay, and here when you typing is that time you work like you act like as a client, and जो response देता है वो act like as a server. Okay, so यहाँ पे क्या है, HTTP server is another name of web server. In Apache web server, the web server is a software. Sorry, okay, the web server software program, the software program maps the URL. Okay, requests come from a web client to a resource. That request will handle and return response to the client. जैसे मैंने अभी आपको example दिया. For the communication between web client and web server, use here HTTP over the TCP network. Like I have given you example, right? So here web client means you, the client like you, user client you can say, and web server. So for the communication between these, if you want any information through Google, so that time you work like a client, and whenever you get the answer, that time this service act like a web server. So both from means the web between web client, the communication between web client and web server use here HTTP over the TCP network. HTTP means hypertext transfer protocol over a TCP network. TCP is a means is a TCP is stand for transfer control protocol. Okay, which is the standard protocol in all overall in all protocol. Okay, so what is the history of Apache server? Now you get that Apache servers 2.0 operating systems जो work होती है. Then Apache what do you mean by Apache 2.2 system, right? Then we have seen the meaning of HTTP server, right? Now let's see. Wait a minute. Okay, now we're going to see what is the history of Apache server. Okay, here
Apache web server who was involved with National Center for Supercomputing Application web server. It is simply known as NCS HTTP is simply named as NCS HTTPD. Okay, so the Robert MC Cool developed by the first version. Here the Apache servers, the Robert, okay, the Robert MC Cool developed the first version. Okay, develop the first version of Apache. Okay, so just उसने first version develop किया. Okay, so here first version of the Apache web server, who was involved with National Center for Supercomputing Application web server. It is simply known as NCS HTTP. The version 2 of Apache server was substantial rewrite of much of Apache version 1 code for further modularization. The development of property layer, okay, portability layer of the Apache portable runtime. The Apache version 2 has several important enhancement over the Apache version 1. मतलब Apache version 1 होने के बाद उसमें से enhancement किया गया, right? मीन उसमें से जो उसका 2 वर्जन किया, मतलब उसको उससे भी ज़्यादा हाई क्लास का वर्जन हमने प्रोवाइड किया, जो कि जिसमें हम लोग बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क कर सकते हैं, राइट? Then Apache 2 released first alpha in March 2000 with first general availability release on 6 April 2002. Okay, Apache 2 released first alpha in March 2000 with first general. Okay, and availability release on 6 April 2002. So here, now what is GNU and Linux? Okay, GNU supplies and return multiple important Linux tools freely. GNU General Public License is distributed under the Linux. It makes mandatory for developers and sellers to create the source code publicly. We have studied about GNU, right? Linux is a strong enough in internet future as well as networking. It is cost-effective solution in setting up an internet server or a local internet. Linux is a carry out at multiple locations across the world at the demand of Free Software Foundation. The most popular GNU flavor includes Red Hat. मतलब GNU में जो या Linux, GNU and Linux is called, it is a means here you have given मतलब GNU और लिनक्स यू कैन से. सो यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर्स है वो यूज किया जाता है रेड हैट, देन डीबैन एंड यू कैन से, मतलब एक रेड हैट का आपको लिनक्स में एक आपको ऑप्शन होगा जिससे आप लिनक्स को परफॉर्म कर सकते हैं उसके ऑपरेशंस. ओके, मेनी सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोड फ्री फ्रॉम द इंटरनेट. All the maximum dealer of computer have committed to support Linux and multiple software ported to this platform. Many computer users run a modify Okay, sorry. All the maximum dealer of computer have committed to support Linux and multiple software ported to this platform. Many computer users run a modified version of GNU system every day without knowing it. The version of GNU which is mostly used today is called Linux. So the version of GNU which is mostly used today is called Linux. The GNU version is today's used in Linux. It's called Unix. Sorry, version of GNU which is mostly used today is called Linux, and many user does not know that is basically the GNU system.
Okay, and that was developed by GNU project. मतलब जो Linux is मतलब most user does not know it, they don't know that they does not know that it is a basically used GNU system that was developed by GNU project. Linux is normally used in combination with GNU operating system. Okay, मतलब Linux ये GNU operating system की combination से use किए जाते हैं. GNU and Linux is promoted by the Free Software Foundation, and the Richard Stallman is the founder of this. You very well know about GNU. In my previous lecture, I have explained in detail about GNU, right? The developer is what Richard Stallman in the found. Okay, founder. मतलब GNU Linux का founder कौन है? Richard Stallman. For example, Linux Trovers set out to write a Unix kernel called as Linux. Linux is an operating system, that is, it is a series of programs that is used for interaction between user and computer. मतलब लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब आप जब भी अपना कंप्यूटर ऑन करते हो देन ये क्या ऐसे ऑन नहीं होता है. वी रिक्वायर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? सो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंटरेक्शन बिटवीन मतलब ऑकर करती है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर. ओके, या प्रोग्राम आप कह सकते हो. ओके, लिनक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम. It is a series of programs that is used to interact between user and computer system and run the other programs. The operating system consists of many programs. Using that program, computer is a communicate and receive instruction from users. Read and write data to hard disks, tabs and printers, run other software control the use of memory. Kernel is the most important part of operating system in GNU Linux system. Linux is a kernel component. Linux users have freedom to choice in their software. For example, Linux users choose multiple graphical desktops and it choose from a dozen different commands line cells. Linux is able to run multiple programs at the same time and it is a more secure than other operating systems. Every Linux kernel can offer the following feature. The Linux kernel offering the following feature. The feature is like multi user, मतलब multi user use Linux. Then you can say here multitasking, मतलब Linux is operating system में हम multitasking कर सकते हैं. Okay, multi multitasking. Then you can say graphical user interface, GUI. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम लोग कर सकते हैं, राइट? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब आप लोग पेंटिंग कर सकते हो. देन यू कैन ड्रॉ मतलब इमेज आप बना सकते हो, राइट? ग्राफिकल यूजर एक्स विंडो सिस्टम. देन हार्डवेयर सपोर्ट दी हार्डवेयर. ओके, हार्डवेयर support. Then networking connectivity we can do it with the help of this. uh, Networking connectivity. Okay, connectivity. Then network servers. Okay, the following some of the popular Linux distribution is Red Hat, Ubuntu, then Fedora. Okay, the popular Linux distribution क्या है? Red Hat, Ubuntu and Fedora. ये इसके Linux से कुछ features है. Okay, like what multi user, multitasking, GUI, hardware support, networking connectivity. Okay, now let's see what is Android. You very well know क्योंकि आप लोग आजकल एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, राइट? सो ये टॉपिक, ये पॉइंट आपका फेवरेट होगा, आई थिंक सो. व्हाट इज एंड्रॉइड हियर? यू कैन इजीली राइट and about Android, right? But you have to know the version 10, कब से Android, कौन सा Android कौन से वर्जन में क्या नाम गिवन है, राइट? Android here. Okay, अब what is Android? अब देखिए, Android is a open source mobile operating system, right? You know very well Android means what, right? It is a open source mobile operating system which is Linux based and developed by Open Handset Alliances, Google and other companies. Android is used for smartphones and tablet computers, right? You know very well Android हम लोग स्मार्टफोन में यूज करते, टैब में यूज करते, टैबलेट में यूज कर सकते.
In November 2007, Open Handset Alliances and other companies, as well as Google, device manufacturer like Sony, Samsung, then to develop open standard for mobile device. मतलब नवंबर 2007 में ओपन हैंडसेट मतलब जो आप लोग यूज करते हो 2007 में ऐसी कंपनियां ने मैन्युफैक्चर किया जैसे कि सोनी सैमसंग ओके फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड दैट इज एंड्रॉइड 1.0 was released in 2008. फर्स्ट वर्जन एंड्रॉइड का 1.0 का रिलीज हुआ इन 2008 ओके देन एंड्रॉइड 1.1 इट रिलीज इन फेब 2009 1.1 ये कब रिलीज हुआ इन फेब 2009 ओके फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज इन 2008 सेकंड 1.1 इज रिलीज इन 2009 then 1.1 is released in 2009 with support for save and attachment of MMS जो कि क्या सपोर्ट करता था it support to for save and attachment of MMS. Then Android 5.1, then Android 1.5 version is also known as Cupcake. It's also known as Cupcake. जो 5. version था उसको हम Cupcake भी बोलते थे. Okay, it was released in you know very well Lollipop, Cupcake. अभी भी बहुत से वर्जन है Eclairs ये टाइप ये इसके नेम से. Okay, जिंजर ब्रेड बहुत से नेम से हम लोग देखेंगे ओके तो वो जो व्हाट इज एंड्रॉइड एंड्रॉइड यू नो वेरी वेल इट इज अ हैंडसेट इज यूज इन मोबाइल एंड टैबलेट 2007 में सोनी कंपनी सैमसंग कंपनी ने इसका डेवलपमेंट हुआ इससे राइट मैन्युफैक्चर किया तो एंड्रॉइड ये फर्स्ट वर्जन 2008 में आया देन 1 पॉइंट मतलब 7 से इसका वर्किंग चालू हुआ था मतलब कंपनियां ने चालू किया था और 2007 में 8 में उन्होंने लॉन्च किया था फर्स्ट वर्जन और जो सेकेंड वर्जन लॉन्च किया था उन्होंने 2009 में मतलब सेकेंड वर्जन में 1 पॉइंट नॉट सेकेंड वन में थोड़ा एडवांस डाला था 1.1 वर्जन लॉन्च इन 2009 जो सपोर्ट करता था अटैचमेंट ऑफ एमएमएस देन 1.5 इट्स आल्सो कॉल्ड कपकेक इट वाज रिलीज इन अप्रैल 2009 ये अप्रैल 1.1 ये फेब में हुआ और 1.2 ये अप्रैल 1.5 ये वर्जन कब हुआ रिलीज अप्रैल in 2009 okay 1.5 is also called cake it was released in April 2009 April ओके आफ्टर 1.1 के बाद 1.5 वर्जन आया है 2009 में इट हैविंग द फैसिलिटी ऑफ ब्लूटूथ मतलब 1.1 में जस्ट अटैचमेंट थी एमएमएस की लेकिन आज आप फुलफिल हो पूरे मोबाइल से राइट जैसे कि यू कैन यूज ब्लूटूथ यू कैन स्टैंड द मतलब नॉर्मल मैसेजिंग यू कैन डू व्हाट्सअप देन यू कैन डाउनलोड योर गेम्स मतलब आज जो भी आप मोबाइल यूज कर रहे हो लेकिन वो डायरेक्टली जैसे आप यूज कर रहे हो वैसे नहीं आया स्टार्टिंग में जस्ट कॉलिंग वर्जन मतलब 1.0 देन 1.1 के बाद मैसेजिंग का सपोर्ट आया 1.15 के बाद ब्लूटूथ का सपोर्ट आया देन वाईफाई सपोर्ट देन मतलब मोस्ट स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट आने के बाद फाइनली जब 5 वर्जन 7 9 8 जो भी वर्जन आप जो आज सब यूज करते इकट्ठा मतलब ऑल इन वन आप जो यूज करते वो मतलब स्टेप बाय स्टेप हुआ ओके वर्जन वाइज वर्जन सो ये इसकी प्रोसेस लॉन्चिंग की प्रोसेस 2009 से हुआ है सो इसलिए 2020 में हम लोग इजीली हर एक मल्टीटास्किंग कर सकते हैं we can use bluetooth we can use wi-fi we can use we can send a message we can do video through mobile right? YouTube मतलब बहुत चीज कैमरा बहुत सब चीज आई लेकिन ये स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था स्टार्टिंग में नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप हुआ राइट एंड्रॉइड ऐसा है ये एंड्रॉइड ऐसा मतलब जैसे कि अभी 1.5 में कब के हम लोग उसे बोलते थे इट्स व्हाट्स रिलीज इन अप्रैल 2009 इट हैविंग द फैसिलिटी ऑफ ब्लूटूथ देन also support unloading the videos to YouTube and pictures मतलब 1.5 में ये क्या हुआ unloading videos और YouTube भी picture के support करता था okay one Android 1.6 it also known as Donut Donut then released in September 2009 then 1.6 version जो release हुआ SAP 2009 okay it's called Donut SAP 2009 okay okay then
मतलब सितंबर, ओके मैं सेप मतलब ओके आई एम रीडिंग सितंबर 2009 सितंबर। Okay, so ये तो 1.6 इसे also called do not then Android 2 point after 1.6 के बाद Android 2.0 और 2.1, ये दोनों का दोनों it known as eclair, it also known as eclair. Okay, eclair ये 2000 ये रिलीज हुआ 2009 में ही, रिलीज इन ऑक्ट, मतलब कितनी फास्ट प्रोसेसिंग थी देखो वर्जन रिलीज करने की, राइट, इज इन सॉरी ओके अक्टूबर 2009 में ये रिलीज हुआ, ओके रिलीज इन ऑफ 2009, ओके सो इसको क्या क्या बोलते हैं, इक्लियर रिलीज इन 2009, इट सपोज HTML5 फाइल्स ब्लूटूथ 2.1 एंड आल्सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर, ओके एक्सचेंजर सर्वर, मतलब ये जो 2 वर्जन ये रिलीज हुआ वो ब्लूटूथ को भी सपोर्ट करता था, फाइल सपोर्ट करता था एंड एक्सचेंज द सर्वर. Then Android 2.2, it also known as it's released in May 2010. It support Wi-Fi, मतलब 2.2 जो आया ना 2.2, okay, it known as Freya, which is released in 2000, which is released in 2010. It support Wi-Fi, okay, ये support करता था Wi-Fi functionality, ओके हॉट वाईफाई हॉटस्पॉट एडोब फ्लैश, मतलब जो 2.2 वर्जन आया उसके बाद वाईफाई का सपोर्टिंग मिला, उससे पहले 1.6 तक हमें वाईफाई का सपोर्टिंग नहीं था, जस्ट वी हैविंग ब्लूटूथ सपोर्ट, यूट्यूब अनअपलोडेड पिक्चर्स एंड ऑल, ओके. Then Android 2.3, it also known as Gingerbread, released in December 2010. मतलब 2.3 वर्जन ये is also known as Gingerbread, which is released in December 2010, ओके 2010 में ये रिलीज हुआ, जिसको हम जिंजर ब्रेड बोलते थे, और मतलब जिसका नाम बोलते नहीं थे, जिसका नाम जिंजर ब्रेड था, इट्स नोन एज, एंड इट सपोर्ट फॉर एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज एंड रिजोल्यूशन, ये सपोर्ट करता था, मतलब ये 2.3 में ऑफकोर्स फर्स्ट जो भी 2.2 तक जो भी स्टेप सपोर्ट करते थे, जो भी फंक्शन थे वो 2.3 में तो ऑफकोर्स हो गई, क्योंकि वन बाय वन वो मतलब गैदर होते गए, राइट. लेकिन जो जब वर्जन रिलीज होते गए वन स्टेप बाय स्टेप, वो हर एक वर्जन ये अपना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के साथ आए, राइट. सो ये सपोर्ट करता था 2.2, ये सपोर्ट करता था इसको वाईफाई को, मतलब BTN ऑल विद ऑल, और 2.3 किसको सपोर्ट किया, इससे एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज एंड रिजोल्यूशन. देन एंड्रॉइड 3. फाइनली एंड्रॉइड 3.0 हुआ, राइट. इट ऑल्सो नोन एज हनी कप, रिलीज इन May 2011, जो कि रिलीज हुआ इन May 2011, ओके 2000 हनी कब बोलते थे. इट सपोर्ट 3D डेस्कटॉप वीडियो चैट एंड मतलब ये जी टॉक, मतलब ये सपोर्ट करता था जो 3D डेस्कटॉप को वीडियो चैट को, ओके. देन एंड्रॉइड इज अ पावरफुल, फिर ऐसे ही 3.0 आए, देन 4. आइसक्रीम सैंडविच बोला गया उसको, देन 4.1 आया जेली बीन, 4.4 आया किटकैट, 5 लॉलीपॉप, ऐसे वर्जन स्टेप बाय स्टेप आते गए जो कि हर एक वर्जन को सपोर्ट करते गए, ओके. मतलब हर एक पॉइंट को हर एक फंक्शन डेवलप करते गए, ओके, इंक्लूडिंग प्रीवियस वन. देन एंड्रॉइड इज अ पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम, इट सपोर्ट ग्रेट फ्यूचर, जैसे कि स्टोरेज, राइट, मैसेजिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी लैंग्वेज, वाईफाई, रिलाइजेबल वेब ब्राउजर, ऐसे वन बाय वन हर एक फ्यूचर ने अपना अपना वर्क एनहांस किया. Then Android provides following application. Android application are developed of one or more application components like activities, service, and content providers. Each component plays a different role in overall application behavior, and each can be activated individually.
It is a manifest file must declare all components in the application and also declare all application requirement. So Android, I hope कि आपको Android के वर्जन समझ में आए कि Android स्टार्टिंग में किस टाइप का था 1.1 में जस्ट कॉलिंग में बी देन एंड 1.1 में वो कॉलिंग विद फंक्शन देन फिर बीटी का फंक्शन आया बीटी के बाद यूट्यूब लोडर देन वाईफाई देन फिर वीडियो एक्सचेंज देन वीडियो कॉल मतलब वन में जो भी आज कर रहे हो वो लास्ट वर्जन जो भी चल रहा है अभी वो ये सारे इकट्ठा फंक्शंस के साथ चल रहा है राइट वी आर सीइंग सो इसमें स्टोरेज कर सकते हैं मैसेजिंग मल्टीटास्किंग मल्टी लैंग्वेज वी कैन यूज नाउ डेज राइट वाईफाई रिलायजेबल वेब ब्राउजर so this is about Android. So in today's session we have seen about Linux GUI of Android. Then what? Then what is the what Apache server? Okay. So today's session over here. Thank you.